recording. Okay, so research process is our today's lecture, and we have been discussing about research process in our previous classes, but now today we will discuss research process in detail. So, what is research process? What comes in our mind when we talk about research or the process of research? Just a minute. Okay, now it's clear. Screen clear hai. I hope the screen is clear and to all of you. Research process. Now, what can be the definition of a research process? The process or the research process involves identifying, locating, assessing, and analyzing the information which you need to support your research question, and then developing, expressing your idea. So, it is a process basically which involves the identification, location, or locating, assessment, and analysis of the information which researchers need to support their research questions, and then finally developing and expressing their ideas. Research process basically is a process, so it can be broken down into different steps. Mostly, the process of research is divided into 7 steps. It can be divided into even 8 steps sometimes. Making it more manageable and easier to understand. Why? Because it's a process. A process depends on different kind of the activities. So those type of all these activities which takes place in the process of the research are divided into different steps. So these are 7 steps, and sometimes this can be how many steps? This can be 8 steps. Now, what these steps are, for example, if it's a process which is divided into the steps, so what can be the steps of the process of research? Now, the steps of the process of the research are like first one step. What is the first step? The step of the research is what? The first one is the selection of the topic. Like these are the steps, and I will define every step of the process of the research in detail. First of all, what we will do, we will start from the selection of the topic. First, what we have to do, we are studying the process of the research. We are like interested to carry out type of the research, any type of the research, and we have to start from the selection of the topic. That selection of the topic is in fact basically the selection of the topic is called research problem. And then when you have defined or you select the topic of the your research, that this is the topic which I will or I have to choose in my research, and then reviewing the literature. First of all, you have selected the topic. The second one is reviewing the literature, the previous literature which already exists for us in the form of different kind of articles or dissertations or books, or like different type of the form of the literature. They can be different sources of the literature. And the third one is development of theoretical and conceptual frameworks. The first is selection of the topic. The second one is reviewing the literature on that topic, so that you can find, you can get a better understanding of your topic which you have selected for your study. And then the third one is development of theoretical and then conceptual framework. What is this theoretical framework and then conceptual framework? Like theoretical framework is basically introduction, thorough introduction of the theories which researchers use in their researches. For example, if I am doing research on parenting styles, and I have to tell that what theory or which theory I am using in my research paper or in my research project. If it can be MPhil, it can be PhD. So I have to tell that, for example, if I am using Ronner's parenting theory, or I am using Diana Bemrent's theory of parenting style, so I have to briefly describe that theory in the development of theoretical frameworks. And then conceptual frameworks means whatever the concepts which you are taking out of those theories, you have to briefly describe those concepts. This would be called theoretical and conceptual framework. Then
Clarification of the research questions and hypothesis. Clarification of the research questions and hypothesis are that you have to clarify your research questions. First of all, you have to select the topic again and again. I am repeating these steps so that you can remember all these steps of the process of research. Selection of the topic, reviewing the literature, development of theoretical and conceptual frameworks, clarification of the research questions and hypotheses, which means that after the process of development, development of the theoretical and conceptual frameworks, the clarification of the research questions and hypotheses. What we will do after theoretical and conceptual frameworks, like after reviewing the literature and providing the information about the theories which are using and about the main important concepts which we have taken to consider in our research project. What will we do? Now we will make research questions or hypotheses and will provide the clarifications of those like concepts. After hypothesis, we have to select a research design. Now, research design is in fact a practical like doing of the research, that you have to do this research practically and what type of a design you would use. If your research is experimental research, you will use experimental research design. If your research is correlational research, you will use correlational research design. If your research is applied research, you will use the design of applied research design. If you are doing longitudinal research, your research design would be longitudinal research design. So there are different type of the designs which are present according to the nature of the research, according to the topic of the research which you have selected, and then according especially about the hypothesis that and what type of the data you would have to collect in your research. So after the hypothesis, the fifth step of the research process is the selection of the research design. After research design selection, now the process of data collection comes. That how will you collect the data? What would be the procedure of collecting the data? Whether you would use interview, you would use scales, और आप उसमें जो है कोई टेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं ये हमें क्या बताएंगी कि हम किस तरह से वो डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च में. What data would be collected and how data would be collected. आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा है, टर्शरी है. तो इसमें क्या होगा, जब आप वो डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो वो उस आफ्टर द डिजाइन आप उसकी क्लेरिफिकेशन देते हैं कि ये डेटा जो है वो हम कलेक्ट करेंगे. देन once you have collected the data, then the analysis of the data will take place. Like this is the seventh step of the research process or the process of the research, where the data analysis, data after data collection, the process of data analysis will take place. What will we do in analysis of the data? Obviously, we will analyze the data quantitatively using statistically using different type of the procedures of statistics. If the data is more importantly in quantitative researches, then after that the analysis of the data, we have to draw the conclusions. These conclusions are in fact the like our own understandings, that now after doing this research on this topic, after the data analysis, after the results what have come out, that now we are drawing some type of conclusions, we are making some type of how I have to say conclusions. रिजल्ट्स एंड उसके बाद में कुछ जो हम अखज़ कर लेते हैं, नतायज अखज़ कर लें, हम उसको कंक्लूड कर लें एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स. ठीक है. सो नाउ वन बाय वन अगेन these steps of the research process I will explain to you, but now we are coming to the start of the research. For example, after these steps, as a student, I don't know whether you are doing some kind of a research or not, but if you will understand these steps of doing the research process steps, you would be able to start or do any kind of a research which would be given to you in the next semester. Like now,
how I have to start. For example, I know that these are the like steps of the research process, and I have to start the research process with all, including all these process, steps of the research process. How I have to start? First of all, you have to come up with some ideas. Like you have to start your research, and you have to come out with some ideas. कुछ ideas आपके पास होंगे, कुछ interest आपके पास होंगे. आप उसमें क्या करेंगे? आप your thesis or dissertation topic can start out very broad. It means that you will take from you will start from a research problem. You will identify some type of a problem and a very broad problem. Then think about the general area of field you are interested in. First, you have to describe. You have to select the area, a big problem, and then the area of your interest in that like a broad problem. And then it's often a good idea to choose a topic that you already know a bit about. What is more necessary that if you have some kind of idea in your mind, it is better to start with that idea. But then you have to be very specific about the field, or about the topic, or about the like your interest in that particular area. And after that, you have, it would be good for all of the like students of research to start our research, or to do the research on a topic that you already know a bit about, तो जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, किसी टॉपिक के बारे में आपने कहीं से पढ़ा हुआ हो, आपकी अपनी कोई इंटरेस्ट हो, उसके हवाले से आपकी कोई लाइक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो. तो अगर इस तरह के टॉपिक के रिसर्च स्टार्ट की जाए तो वो बेहतर होती है, बजाय ऐसे टॉपिक के ऊपर स्टार्ट की जाए रिसर्च जिसके लिए कि आपको, आपके पास अंडरस्टैंडिंग जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत छोटी हो. ठीक है, तो अगर आपने एक दफ़ा इस तरह से कर लिया, अब आपके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? एक दफ़ा हमने क्या कर लिया, हमारे पास हमें पता चल गया कि हम रिसर्च का जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें ये 7 to 8 स्टेप्स होंगे. अब से हमने क्या करना है? ज़ाहिर है हमने 1 से स्टार्ट करना है, हमने टॉपिक से स्टार्ट करना है. तो हमें टॉपिक जो है इस तरह से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम इस तरह का टॉपिक सिलेक्ट करें जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो. और वो यकीनन आपके, आप जानते हैं कि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपकी फील्ड ही से रेलिवेंट होते हैं. यानी अगर हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम रिसर्च जो करेंगे वो उसी टॉपिक्स पे मोस्टली होते हैं जो कि बिहेवियर से रेलिवेंट होंगे. अब हम ऐसा टॉपिक नहीं लेंगे, वहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा टॉपिक नहीं लें जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि जब हम बिल्कुल नया टॉपिक लेते हैं ना, उसमें हमारे लिए मसला पैदा हो जाता है कि हमें क्योंकि नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो उसमें बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो बेहतर क्या होता है? बेहतर ये होता है कि हम कोशिश करके एक ऐसा टॉपिक लें जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी हो. इस तरह से क्या होता है कि जो स्मूथ रनिंग होती है इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है और हम उसको बड़े बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं. तो हमें ये भी पता होता है कि फिर हम उसको किस तरह से आगे कैरी करते जाएं. ठीक है. सेकंड क्या होता है कि ठीक है, अगर आप एक ऐसा टॉपिक न्यू भी लेते हो तो फिर उसके लिए आपने एक स्टार्ट भी कर लिया है. अब आप उसके लिए क्या करेंगे? डू सम रीडिंग टू बिगिन नैरोइंग डाउन योर टॉपिक. अब आप क्या करोगे? आप क्योंकि जनरल टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, हम जनरल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो अब हमने उसको क्या करना है? अब हमें रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको नैरो डाउन करके रिसर्च क्वेश्चंस तक लाना है. लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. रिसर्च जनरल नहीं होती है, रिसर्च में हमेशा स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उसका करेक्टर होता है, उसकी नेसेसिटी भी होती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसको नैरो डाउन करो, यानी उसको छोटा बनाओ, उसको इस तरह से बनाओ कि उसके ऊपर रिसर्च की जाए, वो बहुत बड़ा नहीं हो. Do some reading to begin narrowing down your topic. Look for the topic journals in your field and skim through some recent issues. If an article interests you, check the reference list to find out other relevant resources. These points are very important for all of us as students of research to remind that to remember that please, if we are doing some type of the research, what we have to do, the start from a journal
idea, then to change it in some specific topic, and then literature review. It means that this is the second point which is associated with literature review, that do some reading to begin narrowing down your topic. What you have to do, you do not have to carry out without literature review your research. You have to रिव्यू द लिटरेचर अबाउट द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट. आपका जो भी टॉपिक है इंटरेस्ट का, उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप जर्नल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आप जर्नल्स पढ़ेंगे, और जो आपका इशू है आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे. आप कोई भी जो सोर्स ऑफ डेटा है उससे रेलिवेंट लिटरेचर से आप वो ले सकते हैं, उसके थ्रू आप उसको क्लियर कर सकते हैं. और अगर आपको कोई आर्टिकल इंटरेस्ट कर रहा है जो कि आपके इंटरेस्ट के टॉपिक से रिलेवेंट है, तो उसके रेफरेंसेस लिस्ट में चले जाएं और दूसरे भी वहां से रिसर्चेस जो है वो लेके और अपना कंसेप्ट जो है फर्दर क्लियर कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द थर्ड, what will you do after that? As you read, take notes and try to identify the problems. Now this is very much important. If you are reading the article, you have to make the note of that article. Notes in the point of okay. If you will read, you have what we have to do, what is necessary for us to take notes and try to identify the problems, the research question, debates on that topic, and contradictions and gaps. Gaps are in fact some type of the research, some type of the questions which have not been given. Like the answers of those research questions are not given in the previous literature, so you can do the researches on those gaps. कि अगर फर्क gaps क्या होते हैं? Gaps ये होते हैं रिसर्च में कि अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए हम उसी से देखेंगे कि पहले क्या रिसर्च की गई है और उसमें क्या जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अभी भी आंसर जो है नहीं दिए गए हैं, तो हम उस gaps को फुल कर सकते हैं. ठीक है. Your aim is to narrow down from a broad area of interest to a specific niche. Now after that, make sure to consider the practicalities. आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये रिसर्च जो है प्रैक्टिकल करना आपके लिए आसान होगा. The requirements of your research program or the research project, the amount of time you have to complete, कितना amount लगेगा उस research को करने में, कितनी difficult जो है it will be to access sources and data on the topic. Sources को achieve करना, access करना, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल इन अदर वर्ड्स जो अगर सिंपल बताऊं कि आप सैंपल कैसे लेंगे और दूसरा क्या करेंगे. बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज, इट्स अ गुड आइडिया टू डिस्कस द टॉपिक विद योर सुपरवाइजर. रिसर्च करते हुए जाहिर है आप जब रिसर्च करते हैं तो किसी न किसी के साथ में हम जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनकी जो गाइडेंस है रिसर्च करवाने वाले टीचर की, गाइड की, सुपरवाइजर की, वो बड़ी ज़रूरी होती है. ठीक है. तो हम अगर कहीं पे अटक जाएं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हम ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम कहीं पे अटक जाएं तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सुपरवाइजर के साथ जो है उस टॉपिक को डिस्कस कर लें कि इतना तो हमने कर लिया है, अब वी आर फीलिंग डिफिकल्टी कि अब इसको किस तरह से जो है वो लिया जाए, किस तरह से हम उसको फर्दर कर सकते हैं. Okay, now after that, what will we do? For again, I am now look. What was the first? What were the steps? What were the first steps? These were the steps. What? Selection of the topic, reviewing the literature, development of theoretical and conceptual frameworks, clarification of the research questions and hypotheses, research design, data collection, analysis of the data, and drawing conclusions. Now this was the start which I have explained to you. Now when first you have identified the problem, so you have selected on a topic, which means that now you have selected on the topic. And now what you have to do, if you have selected on a topic and found a niche, but what exactly will your research investigate and why does it matter? It means that आप जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो. आप अगर रिसर्च के ऊपर जो अगर आपने कभी सेमिनार अटेंड किए हो तो वहाँ पे आपको ये पता चल रहा होता है कि उनसे रिसर्चर से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
आपने ये रिसर्च क्यों की है, मतलब ये जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है ये क्यों सिलेक्ट किया है, इसकी कोई लॉजिक है। तो ये उसी का है कि वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑन अ टॉपिक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, what exactly will you investigate in your research. Now you have to be very clear, identify the problem. It means identify your research question, your research problem that you want to investigate or want to do. And to give your project focus and purpose, you have to define a research problem, that this is my research problem. How we can define our research problem? The problem might be a practical issue, and alternatively the problem might be a theoretical problem. Look here, this is a practical problem can be the problem of your research, and theoretical problem can also be the problem of your research. For example, process or practice that is not working well. कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रैक्टिस है जो वर्किंग वेल नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर जो है एक रिसर्च कर सकते हो। जिस तरह से अभी ऑनलाइन टीचिंग चल जा रही है ना, तो अगर ऑनलाइन टीचिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, फॉर एग्जांपल नहीं हो रही है सक्सेस, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन टीचिंग जो है दिस हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है वो बहुत कम है। जैसे अगर केजी से हम ले लें, अगर हम नर्सरी से ले लेते हैं, अगर हम 1 क्लास के बच्चे ले लेते हैं, 2 के ले लेते हैं, तो फिर उनके लिए क्या प्रोसीजर किया गया है, उनको 1 आवर की क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, उनको मोस्टली हाफ आवर की क्लासेस दी जा रही हैं। लेकिन उसके बाद में भी दे बिकम लाइक टायर्ड, वो नहीं लेते क्योंकि उनकी इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रही है उस चीज़ों में। तो इस वजह से ये एक प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल जो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि ये जो है वो स्कूल एज जो चिल्ड्रंस हैं या स्टूडेंट्स हम कहें, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं वर्क कर रही है। तो ये दिस इज अ प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है और उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करना है, एरिया ऑफ कंसर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर आप कर सकते हो। डिफिकल्टी फेस्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, आप उसके ऊपर कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि यानी ये नेचर है आपके रिसर्च प्रॉब्लम की, या तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोई होगा जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, या फिर वो अल्टरनेटिवली क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होगा, यानी रिलेटेड विद थ्योरीज के ऊपर जो होगा, कहीं पे कोई थ्योरीज दी गई हैं, मॉडल्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही हूँ, उसके ऊपर कंट्राडिक्शंस हों, उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उसमें कुछ गैप हो, यानी कोई चीज़ें रह गई हों जो नहीं क्लियर है, तो उन गैप्स के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली यू माइट choose to investigate a theoretical problem, for example in under explored phenomena or a relationship, a contradiction between different models or theories, or an unresolved debate among the scholars about any type of a theory, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, to put the problem in a context and set your objectives. What now you have to do, if you are doing or you have chosen any practical problem, you have chosen any theoretical problem, after choosing your research problem or the topic of your research, now what will you do, you will put the problem in the context, उस situation में रखेंगे जहाँ पे कि वो उसको study करेंगे, objectives हम बनाएंगे। You can write a problem statement. This describes who the problem affects, why research is needed, and how your research project will contribute to solving it. ये जब हम ये राइटिंग के साथ में ज़्यादा एसोसिएटेड है कि जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट कर दिया, तो अब आप उसमें एड्रेस क्या करेंगे, यानी आप उसमें क्या रखेंगे, आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएंगे, आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम जो है किसके ऊपर किया जा रहा है, किसके ऊपर ये रिसर्च होगी, क्यों होगी, और इसके जो है आखिर में एंड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, फार्मुलेट करने हैं रिसर्च क्वेश्चंस। आपने जब एक दफा रिसर्च प्रॉब्लम से रिसर्च प्रॉब्लम लिया, आपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर दिया, आफ्टर एक्सप्लेनिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दैट रिसर्च प्रॉब्लम इन रिसर्च क्वेश्चंस। आप पर्सनल चैट नहीं करो ड्यूरिंग क्लास, पर्सनल चैट प्लीज डू नॉट चैट।
Formulate the research questions. Meeting time. Okay, so are you there? हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अभी Yes, अभी ma'am. क्योंकि टाइम जो है मीटिंग का ओवर हो रहा है, तो हम इसको कल जो है दोबारा से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, और जो बाकी जो इसके स्टेप्स रहते हैं अप टू द डेटा एनालिसिस, इसके ऊपर आप स्क्रैचेस कर रहे हो, मैं समझती हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होता है तभी आप करते हो, तो ठीक है। और tomorrow we will start, and if you have any questions regarding क्योंकि steps जो है I have cleared the steps. If you look at the steps I have cleared to you, but one by one obviously there are some type of the like explanations which are remaining. So I will give you the explanations of remaining parts of the research process to in a tomorrow's lecture. But if you have any questions, so you can ask. मैम जी, मैम मेरा प्रीवियस लेक्चर से आपसे क्वेश्चन है एक। प्रीवियस से नहीं, अभी आप इससे करें तो फिर प्रीवियस से हम करेंगे। मैम हमें आपसे एक फेवर चाहिए थी, आपसे एक फ्यू 2 मिनट्स बात कर लें। क्या हम व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं आपको? आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके यहाँ जूम में है वो आप मुझे बिल्कुल कर सकते हो, और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे ये पॉसिबल नहीं रहता ना कि व्हाट्सएप पे जो है वो दिए जाए आंसर सारे उसके क्वेश्चंस के, लेकिन अभी आई थिंक यू हैव 2 to 3 मिनट्स आपके पास टाइम है, तो आप कर सकते हो। और मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ, आप उसमें छोड़ दें, ठीक है, आप उसमें चैट बॉक्स में छोड़ते जाएं, तो मैं स्टार्ट करूँगी। अब हम कहाँ थे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम व्हेन वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स की एक्सप्लेनेशंस मैंने दे दी, उसके बाद में क्या करेंगे मैम? जी? Yes. After identification of the problem, formulate the research questions. Now, next step based on the problem statement or the selection of the problem, you need to write one or more research questions, and these target exactly what you want to find out in your research. They might focus on describing, comparing, evaluating, or explaining the research problem. Now, these are some type of the problems which will help us to understand that how we will carry out our research. They will explain that how we will carry out our research. And a strong research question should be very specific enough that you can answer it thoroughly using appropriate qualitative or quantitative research methods. You like research questions which you formulate after identification of the research problems and making problem statements. You have to make the questions whether it is a qualitative or quantitative study. They should have to be very specific. And in some type of the research at this stage, you might also have to develop a conceptual framework and testable hypothesis. Now, this was the step which I told you,
that after like these research questions, before making these research questions, after reviewing the literature, we have to develop the theoretical and conceptual framework. After that, the design is coming. When we make the hypothesis, we clarify our research questions. After that, what we do, we choose the research design. This is also very like important step of our research process, where we have to select the research design. And after selecting the research design, the process of data collection is the next step. And in the process of data collection, मैम आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम का लास्ट पॉइंट मिस हो गया है. इट्स ओके, आप LMS पे ये जो है लेक्चर चला जाएगा, वहां से देख लीजिएगा. मैं जो ये पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. Data collection and data analysis. Now data research design, then data analysis of the data which you have collected in your research, and then analysis of the collection, and then analysis, yani statistical analysis of the data, and then finally drawing the conclusions. Different kind of the conclusions is a result of our understanding of the research is called conclusions, making conclusions on the basis of the results which we get in our research questions. Create a research design. This is very important. I have told you that research design is a practical framework for answering your research questions. It involves making decisions about the type of data and meet the methods you will use to collect and analyze it. Okay, and the location, time scale of your research. It means the design of the research, you have to design what type of the methods would be used for the collection of the data, and different type of other steps. Practical framework for answering the questions of our research. Data collection, once the issue identified, then you should have a clear idea of what data to collect and how to collect the data. You have to consider which methodology to choose and which methods to utilize within the methodology. Data के डिजाइन जब हमने सिलेक्ट कर ली, तो फिर अब हम क्या होगा, हम उसके लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे. वो डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से वो डेटा जो है हम कलेक्ट करेंगे, क्या डेटा हमारे पास कलेक्ट होंगे, और कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो हम यूज करेंगे कलेक्शन ऑफ द डेटा के लिए. एनालिसिस, फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन. Analysis and discussion of the findings. Once the data you have collected, now researcher need to analyze the data and to provide answers to your research questions. Methods of data analysis should always be related to the objectives of the research. That is, your analysis should answer the research questions or hypothesis. And in the discussion section, the results, like in a discussion of the results, reference should also be made back to the literature reviewed in stage 2. Like here, what happens in the analysis of data analysis and discussion of the findings, like once you have analyzed the data, and after analyzing those data, what will we do? We have identified different kind of the findings like comes to us as a result of our research in analysis of the data. So now we will discuss those results, and those discussions should be relevant to the literature review and especially to the research questions. Like we will discuss that these were our research questions, our hypotheses, and these are our findings, and how they are related, or what the results have come, and these are the reasons or explanations of those findings. This will happen in research in the step of discussion. This was all about research problem, research process. If you have any question, you can ask. 1 minute is, we have 1 minute left. If you have any question, please ask. Can we use two research designs in one research? Two research designs can be used or not. It depends on the topic of the research. If it will require the two designs, they can be used, but mostly one type of a research design is used in a research.
मैम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम का लास्ट पॉइंट मिस हो गया था। लास्ट पॉइंट कोई नहीं होता, बस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में यही है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि ये आपका प्रॉब्लम है, फिर उसको